Hello everyone, myself Pragnesh Numrigar, the in-charge teacher of IMO International Maths Olympiad. Right? I'm here over here to guide you for this examination. Right? Now, few of the chapters such as numbers, then addition, subtraction, multiplication, length, weight, etc. They are somewhat similar to the SAM 1 our current syllabus, so you can go with that one, right? So I am over here to help you in the chapter number 8, that is geometrical shape, right? Now here the word geometrical can be split into two parts, that is geo and metric. Geo and metric. Geo deals with earth, right? And metric means measurement. Metric means measurement. So in this chapter we are going to look, or we are going to see about the measurement of different shapes that can be seen around us, right? આપણા earth ઉપર, આપણા atmosphere માં, આપણા stratosphere પર, આપણા આજુબાજુ, right? આપણને જે different shapes જોવા મળે છે એ shapes નું what we are going to do, we are going to measure that shapes. So that's why we are going to learn the chapter that is geometrical shapes, and we are very familiar about different types of shapes, right? Triangle, square, rectangle, circle, right, etc. Right? We are very familiar about cone also, we are very familiar about cylinder also, we are very familiar about sphere also, right? About that shapes આપણે જાણીએ છીએ, right? So we are going to learn about their measurement, how to measure that different types of shapes. Now for measurements, the important, the basic necessity are required, and first we will look for that thing, what does it says. So let's move further. In our day-to-day life, we come across numbers of objects. All objects have specified shapes and size. Right? We are very familiar that each and every objects around us, they are formed of different shapes and different size. Right? We recognize a number of objects by their shapes. Right? We can identify that yes, it is triangle, it is square, it is a rectangle, it is circle by just observing the figure. Right? Therefore, to know about the objects of their shapes is very important. In this chapter, we are going to study about the shapes of different geometrical figures and how to measure that. Let's see one by one. The first basic necessity, right, to form a shape, right? कोई भी object मारे draw करना होए, the basic thing I require, that is a point. सानु requirement है a point. What is point? So point is used to show a particular location. It is a dot is placed over it. That dot is known as point. For example, if I want to indicate something, I can say this is point A, point B, point C. It determines the location. इसको determine કરીને आपसे एक location determine કરીને आपसे, बराबर? So it is A is a point. Here you can see it is simply represented by a dot, and it determines the location of the object. Now from point, let's see how line segment is formed. Right? So line segment is defined as the shortest distance, right? The shortest distance between two fixed points, right? For example, here is your point A and here is your point B. These are the two location of point A and point B. If I join them, it will give the distance between these two. ये बेनी बच्चे इसमें आपसे माने distance, and it is nothing but the line segment
EB એ શું ડિટરમાઇન કરીને આપશે લાઇન સેગમેન્ટ AB and it has a fixed point એનો પોઈન્ટ ફિક્સ છે રાઈટ પોઈન્ટ બી ફિક્સ છે સાથે સાથે એની લેન્થ બી કેવી હશે ફિક્સ હશે ફિક્સ્ડ લેન્થ right we cannot change the length બરાબર and it can easily measure right આપણે એનું મેઝરમેન્ટ કરી શકશું it can be measured શું મેઝર કરી શકાય લાઇન સેગમેન્ટ સમજ પડે if I want to measure I can use the scale and I can measure this given line segment barabar so line segment has two fixed point barabar બે fixed point છે and it can be measured એને આપણે measure કરી શકશું સમજ પડે so these are the fixed point A and B fixed point and the distance curve right that will be the line segment and it can be measured barabar sure let's see examples how many line segments are there in the following figure now here you can see that one figure is given to you so we have to find the number of line segment for line segment it must have two fixed point or you can say two end point and an end point भी કહેવાય એક starting point હોવો જોઈએ અને એક ending point હોવો જોઈએ જો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરું છું so here it is 1 બરાબર 1 થઈ ગઈ line segment 4 again from here to here 2 then from here to here 3 from here to this way 4 5 and if I join to last one so we can say 6 so how many line segments are there 6 line segment समझ पड़े छे आ फिगर में कितनी लाइन सेगमेंट छे 1 2 3 4 5 6 line segment छे right so in this way we can identify the line segment why because it has two fixed point two end point समझ पड़े छे so this is all about line segment second one that is array so how it is defined so it is defined as the extension of a line segment in one direction up to infinity means what right कि यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो है यहाँ देखो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है समझ में आया राइट मींस व्हाट इट इज एक्सटेंडेड जा रही है एक ही डायरेक्शन में जा रही है राइट कहां तक कुछ मालूम नहीं इनफाइनाइट अनकाउंटेबल आई कांट गेट द एग्जैक्ट आईडिया कि हाउ लॉन्ग इट इज right so for example if A here is a point A that is your starting point right and this is extending in I can say right side so let's try to extend see जा रही है उसका एंड ही नहीं है right तो यहाँ पे मैंने लिखा B but यहाँ पे no ending point यहाँ पे भले मैंने लिखा है P पर वो मेरा एंडिंग पॉइंट नहीं है बराबर तो ऐसे फिगर को हम क्या बोलेंगे रे बोलेंगे ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे रे बोलेंगे एंड आई कैन से दैट रे कैन नॉट बी मेजर रे का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि मेजरमेंट के लिए मेरे को दो एंड पॉइंट चाहिए पर यहाँ पे तो एक ही है बराबर एक ही है दूसरा तो है ही नहीं राइट वो जा रहा है राइट
उसका हम मेजरमेंट कर सकते नहीं है। सर क्या रे यही जाएगी, दूसरी साइड नहीं जाएगी? तो रे को हम दूसरी साइड भी पहुंचा सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने बी लिया, तो बी क्या हो जाएगा, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। बी मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट है? एंडिंग पॉइंट नहीं है, जा रहा है, मान लो कि यहाँ सी पॉइंट लिखा है, तो ये मेरा आ गया रे बी सी। स्टार्टिंग तो है लेकिन एंडिंग नहीं है, इसलिए हम उसको लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे एरो दिखाना है, रे बी सी, स्टार्टिंग पॉइंट पहले आएगा, बाद में मेरा जो नंबर है वो। अगर इसको मेरे को डिनोट करना है तो इट कैन बी रिटन एज, बोलो कैसे डिनोट कर सकते हैं, ए बी। स्टार्टिंग होगा ए से लेकिन उसका एंडिंग नहीं है, इसलिए मैंने क्या है यहाँ पे इंडिकेट किया है, एक एरो इंडिकेट किया है। समझ में आया? सो दैट विल बी योर रे। व्हाट इट? चलो एग्जांपल देखते हैं। How many lines, how many rays are there in the following figure? यहाँ पे जो फिगर दिया है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, उसमें कितनी रे है वो दूर निकालनी है। तो राइट, तो रे के लिए तो मेरे पास एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं जो जीरो को कंसीडर करूंगा और ये सब भूल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ से ये जो ऊपर जा रही है वो मेरी पहली रे आई, रे ओ ए। वो कौन सी रे हो गई, रे ओ ए, बराबर। चलो अब ये सब भूल जाओ और यहाँ पे स्टार्ट किया, देखो राइट हैंड साइड एक जा रहा है, क्या जा रही है, ओ डी। सो सेकेंड रे मेरी क्या आई, ओ डी, बराबर। चलो अब ऊपर के तीन भूल जाओ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कौन सी रे होगी, रे ओ सी, रे ओ सी, राइट। सिमिलरली अब ये सबको वो कर लो, रे ओ बी, रे ओ बी, बराबर। चलो बस इतनी ही रे है, नहीं और भी बहुत ज्यादा रे है, राइट। कहाँ है, चलो ढूंढते हो उसको। अब सी को स्टार्टिंग कर लो, तो सी से आएगा ऊपर जाएगा तो ओ ए, सिमिलरली ओ सी, ओ सी भी हम लिख सकते हैं, राइट। सीओ, सीओ भी हम लिख सकते हैं, या तो सी आपसे सी ए सी ओ, बराबर। सिमिलरली यहां पे को चेक करूंगा तो ओ डी, सॉरी यहां से बी को ले लो, सेंटर बी को, तो बी डी, रे बी से स्टार्ट हुआ डी तक, बी डी, सिमिलरली रे ओ डी, ओ डी तो आ गया, तो नहीं लिखेंगे तो चलेंगे बी डी। अब यहां पे ले लो ये वाला पॉइंट ए, तो कौन सा आएगा, ए सी, रे कौन सी आई, ए सी, राइट। अब इस पॉइंट को ले लो तो क्या आएगा, बी डी, रे बी डी। समझ में आया, समझ में आया क्या हुआ है क्या नहीं, राइट। चलो अभी कितनी हुई, ना बी से स्टार्ट करूंगा तो बी डी तो आ गई, अब क्या आएगा, बी ओ, रे बी ओ। ए से स्टार्ट करूंगा तो ए सी तो आ गया, अब क्या आएगा, रे ए ओ, रे ए ओ। यहां से स्टार्ट करो तो बी डी हो गई, अब क्या आएगा, रे डी ओ, रे डी ओ। और यहां से स्टार्ट करूंगा तो रे सी ओ। तो इस तरह से हम कितना रे डिफाइन कर सकते हैं, 12 रेज आ गए। हाउ मेनी रेज आ गए, 12 रेज आ गए, बराबर। यहां पे देखो एक बार फिर से बताता हूं, अलग अलग कलर का यूज करके दिखाता हूं, बराबर। चलो तो यहां पे मेरी ये फर्स्ट रे, फिर ऊपर जाऊंगा, सेकेंड रे साइड पे आऊंगा, थर्ड रे अब नीचे जाऊंगा,
4 3 बराबर। चलो 4 आ गया, यहाँ पे B है, O है और D है, A है और C है। अब स्टार्टिंग विथ A से स्टार्ट करूंगा तो नीचे तक आऊंगा, राइट। तो ये मेरा AC फिफ्थ वन। D से स्टार्ट करूंगा, सिक्स्थ वन। यहां से C से स्टार्ट करूंगा, सेवंथ वन। B से स्टार्ट करूंगा, एट वन, राइट। चलो अब B से स्टार्ट किया तो यहां तक आऊंगा, यहां तक, राइट, दैट विल बी 9 1। A से स्टार्ट करके भी सेंटर तक आऊंगा, 9 10 1। D से यहां तक 11 और C से यहां तक 12। इसलिए हम कितनी रे हो गई हमारी, 12 रेस हो गई, बराबर। चलो नेक्स्ट, second one, that is a line. What is line? Right? So line is defined as the extension of line segment up to infinity in either direction. Right? मान लो कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट AB, right? यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, लाइन सेगमेंट AB. If I want to form a line, what can I do? I want to extend this सेगमेंट, इस सेगमेंट को एक्सटेंड करते जाओ। राइट हैंड साइड को एक्सटेंड किया, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड को भी एक्सटेंड करते जाओ, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, इट विल फॉर्म लाइन AB, इट विल फॉर्म लाइन AB and it is extended in both the direction, so it cannot be measured, it cannot be measured, हम उसका मेजरमेंट कर सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो इसका नो स्टार्टिंग पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, राइट। लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो दोनों डायरेक्शन में जा रही है। समझ में आया, राइट। तो चलो देखते हैं, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो नीचे फिगर दिया है उसमें कितनी लाइन्स है, कितनी लाइन्स है, तो लाइन के पास दो एरो होने चाहिए, रे के पास सिंगल एरो होने चाहिए। लाइन सेगमेंट में तो एरो नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा एक एरो वाला और यहाँ पे वापस एक दूसरा दो, राइट। सो टोटल हाउ मेनी लाइन्स आर देयर, 2 लाइन्स आर देयर। तो ये फिगर में कितनी लाइन्स है, 2 लाइन्स है, बराबर। आइडिया है व्हाट इज आवर स्मोकिंग टुडे, राइट। सो देयर आर 2 लाइन्स। चलो फटाफट रिकॉल कर देते हैं। द फर्स्ट वन क्या सीखा हमने, पॉइंट, राइट। इट इज अ लोकेशन, वो क्या है, एक लोकेशन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और इट कैन बी रिटन एज, राइट, यहां पे ऐसे, और इसको रीड कर सकते हैं पॉइंट ए, राइट। सो व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज अ लोकेशन। सेकेंड थिंग वी हैव लर्न, दैट इज लाइन सेगमेंट, राइट। लाइन सेगमेंट क्या है, तो वो वैसा फिगर है हैविंग 2 एंड पॉइंट, उसके पास क्या है, 2 एंड पॉइंट है। इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड, कैसे, तो यहाँ पे AB मेरा लाइन सेगमेंट है एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय लाइन सेगमेंट AB। उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट AB, इट हैज 1 स्टार्टिंग एंड 1 एंडिंग पॉइंट, राइट। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 स्टार्टिंग एंड 1 एंडिंग पॉइंट,
उसके बाद हमने सीखा है थर्ड वन, दैट इज रे। थर्ड वन क्या सीखा है हमने? रे। राइट, एक्सटेंडेड in one direction, right? जैसे कि ऐसे भी एक्सटेंड हो सकता है और इस तरह से भी एक्सटेंड हो सकता है, राइट? वन एंड पॉइंट, नो, वन स्टार्टिंग पॉइंट, वन स्टार्टिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, बराबर? तो उसको डिनोटेट करेंगे एस रे ए बी, राइट? यहाँ पे कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, एक्स वाई टी क्यू जेड आर टी व्हाटएवर जो अल्फाबेट होगा वो, राइट? चलो नेक्स्ट वन, लास्ट में जो हमने सीखा है वो फोर्थ वन, दैट इज लाइन, राइट? वो क्या है? एक्सटेंडेड in both direction. It is extended in both direction. So like this way, right? ये मेरी क्या है? लाइन। लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकती है, ऐसे भी आ सकती है, whatever जो होगी वो, right? So no starting and no ending point, right? Starting और ending point नहीं है, right? Secondly, cannot be measured, उसका हम मेजर कर सकते नहीं है। और कैसे डिनोट कर सकते हैं? लाइन ए बी, उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, right? So these are the four things that we have learned regarding the basic part of geometry. Now next, moving further with the chapter, angle. What is an angle? So inclination between two rays having common end point is called an angle, right? Inclination means એક slant જેવું ફોર્મ થાય, કેવી રીતે? તો જો મારી પાસે આ રીતની એક રે છે, right? This is one ray, the base ray, right? આ રે સાથે હું કોઈ slant એક બીજી રે ડ્રો કરું, right? એક straight upper direction ડ્રો કરું, एक आ રીતની slant line ડ્રો કરું, એક straight slant line ડ્રો કરું, એક lower part માં ડ્રો કરું, then the angle between these two arm, આ બે આર્મ વચ્ચે જે મને આવું કંઈક ફિગર આઉટ થાય છે, that is my angle. ये શું થઈ જશે? મારું એંગલ થઈ જશે. સમજ પડે છે? તો શું છે? એક ઇન્ક્લાઇનેશન, એક અહીંયા ઇન્ક્લાઇનેશન આવ્યું કોના વચ્ચે? between two rays having common point. કયો પોઈન્ટ હોવો જોઈએ એની પાસે? common point. means what? આ જે પોઈન્ટ છે તે આ રે માં બી છે, આ પોઈન્ટ આ રે પર બી છે, એવું કહેવાય છે. એક સિમ્પલ ફિગર ડ્રો કરીને બતાવો નેમિંગ સાથે. તો A B and C. તો this B is on this ray. આ રે પર બી છે ને સાથે સાથે આ રે પર બી છે. So that's why it is common. Right? Starting point કેવો છે? બંને રેનો common છે ને જે વચ્ચે જે આ રીતનો શેપ મને ક્રિએટ થાય છે, that will be my angle and it can be written as angle ABC. See, common point મારો માં આવશે, સેન્ટર માં જ આવશે. સમજ પડે છે? ચાલો હવે જોઈએ રાઈટ એંગલ. તો રાઈટ એંગલ કોને કહેવાય? an angle whose measure is exactly 90 degree is called a right angle. એનું મેઝર કેવું હોવું જોઈએ? exactly 90 degree
right angle કહેવાશે. Let's see the figure. So here you can say that it is a right angle triangle, right? કારણ કે આજે એક રે ડ્રો કરું સ્ટ્રેટ, અહીંયા એક બીજી રે ડ્રો કરું સ્ટ્રેટ. આ બંનેનું મેજર કેટલા ડિગ્રી છે? એક્ઝેક્ટ 90 ડિગ્રી. તો એવાને કયો એંગલ કહેવાશે? રાઈટ એંગલ કહેવાશે. સમજ પડે છે? હા, ચાલો. Then second one, an angle whose measure is less than 90 is called acute angle. Measure કેવું હોવું જોઈએ? Less than 90. તો let's see. તો પહેલા તો હું 90 ડિગ્રી નો એક એંગલ ડ્રો કરી દઉં. તો આ મારું કયું એંગલ કહેવાશે? રાઈટ એંગલ કહેવાશે. બરાબર? So this is my right angle. If I want to draw acute angle, what I have to do? The another ray must be slant, right? Less than 90. So this will be my acute angle. Sir, મારે બીજી draw કરવી છે. Yes, you can. So this is also an acute angle. એનું measure કેવું છે? Less than 90. Here is also my acute angle. Again the measure is less than 90. Here is also an acute angle. Again the measure is less than 90. Right? Again you can see less than 90. So these angles are known as acute angle. જેનું measure કેટલું હશે? Less than 90 degree. Got it? ચાલો. બીજું છે obtuse angle. Obtuse angle શું કહે છે? An angle whose measure is greater than 90. Greater than 90. તો ચાલો પાછો એક 90 ડિગ્રી નો એંગલ ડ્રો કર્યું હું. ચાલો. So this is my right angle, right? But what I have to draw? I have to draw obtuse angle. Means the measure will be more than 90 degree. 90 degree કરતા વધારે. So yes, થોડો ઉપર ચાલ્યો જવા. So here you can see it is an obtuse angle, right? Again if I draw this, it will be the obtuse angle. Again I can draw this, it is an again obtuse angle. Again I can draw this, it is an obtuse angle. એવા angles ને કેવા angle કહેવાશે? Obtuse angle, right? So here you can say that this angle is greater than 90. That's why it is an obtuse angle triangle. The following angle is, chalo, which type of angle is? So you can see that it is more than 90. એક 90 degree plot કરું છું, right? And you can say it is more than 90. 90 degree કરતા વધી ગયું. તો એ કયો angle કહેવાશે? It is an obtuse angle. સમજ પડે? So what we have learned about triangle, right? So let's see types of triangle. Sorry, types of angle. The બીજું એનું measure, right? Sure. The first one, right angle. First one કયું? Right angle. So how is the measure? Exactly 90 degree. એનું measure કેવું હશે? Exactly 90 degree. Second one, we have seen acute angle. How is the measure? Less than 90 degree. 90 કરતા ઓછું. And third one, obtuse angle. And how is the measure? It is greater than 90 degree. તમારી પાસે ત્રણ types ના angle છે: right angle, acute angle અને obtuse angle. Right angle exactly 90 degree, acute angle less than 90 degree, obtuse angle greater than 90 degree. Right? Figure draw કરવું હોય તો right angle નું આવું figure આવશે, acute angle નું આ type નું figure આવશે, obtuse angle નું આ type નું figure આવશે. બરાબર? So these are the three types of angle that we have seen. Okay?